start. Alright. We saw many recurrences. Today's lecture is all about solving recurrences. It looks very mathematical, but it has a beautiful connection with analysis of your recursive programs. आपको मैंने कुछ recurrences लिख के दी थी. आपको याद होगा कि for example ये recurrence Tn is equal to Tn minus 1 plus 10. Okay? अगर मैं आपको ये recurrence लिखूं, यहाँ अगर मैं ये recurrence लिखता हूँ, कि ये क्या होता है? पहले स्टेप पे कॉस्ट आती है, ये रिकर्सिव कॉल इधर जाती है बाबा जी, है ना? तो ये Tn-1 पे कॉल जाती है. That comes out to be Tn-2 plus n-1 because इसी n की जगह n-1, right? ये क्या होता है? ये दोबारा कॉल जाती है Tn-2 की, that is equal to Tn-3 plus n-2. Similarly, ज़्यादा जाता नीचे. T2 is equal to T1 plus 2 होगा. T1 is equal to 1. ये वो बेस केस है जब ऑपरेट करता है. और जब बेस केस फिट करता है तो ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस होती है, तो ये 1 plus 2 जाता है. और यहाँ पर आएगा तो ये 1 plus 2 plus 3 हो जाएगा, है ना? और इस तरह से अगर आप इसको देखें तो actually this becomes the summation of base which is how much? सही सारा कंबाइन होकर लेस देन 2n हो जाएगा. How many of you say this? If you combine this up, this becomes less than 2n. See? इसको सम करें तो कम. How many of you think that? Sir, बताओ. n बनेगा. ये सम करें तो n बनता है. 1 plus 2 plus 3 plus 4 से लेकर n तक ऐड करें तो n बनता है. सर जब इसको ऐड करेंगे तो n नंबर ऑफ टाइम्स एडिशन हम कर रहे हैं इसकी वो देख. 1 से लेकर मैं 1000 तक ऐड करूँ तो आंसर 1000 आएगा. नहीं. कितना है? तो n plus 1 हो जाएगा. 1000 plus 1. 1 plus 1. 1001 आएगा ना. अब 1 से लेकर 1000 तक मैं ऐड करूँ तो आंसर 1001 आएगा. नहीं, आपने जितने नंबर ऑफ एडिशंस किए हों 1 से लेकर 1000 तक ऐड करें या 1 से लेकर n तक ऐड करें तो किसके 1 plus 1 से क्या आप सोचा ना? सच तो n plus 1 होता है. तो कौन होता है? Another lecture is इसके मैं क्लास में प्रैक्टिस की थी तो वो ये थी कि मैं इसको इसमें ऐड करूँ. That comes out to be n plus 1, but this is not all I have done. I will add n minus 1 to 2, that becomes n plus 1 again. I will add n minus 2 to 3, that becomes n plus 1 again. Comes out to be n by 2 pairs, each one of them is n plus 1. This is the solution. And if you solve it up, 10 squared by 2, that is 10 by 2, which is O of how it is going to go. Very sad. चलिए जी, start करते हैं दोबारा से. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n by 2 plus n by 2 plus 1
is this summation p1? One way to remember is this, the folding technique. If one को आखिर से मिला दो, it's फिर से fold कर दो, इससे fold कर दो. Every fold's length will be equal to n plus 1. But that is not an easy thing to remember. Another trick is the following. We saw that there are two very important quantities which we have learned. One was big O and one was big omega. Okay? What is big O? Big O is bounding something from below. And what is big omega? Big omega is something which is bound from below. Okay? And we saw that if one quantity which I want to bound, if I can bound this quantity by the same function from the above and by the same function from the lower bound, then it means that I have found the theta of this quantity, which means I have found a closed bound. Okay? What do I mean by this here? मैं एक काम करता हूँ, मैं भी आपके सामने दो बाउंड्स दिखाता हूँ और उनके दरमियान में गैप है. And then what we're going to do is we're going to shrink that gap. So देखते हैं जी. ऐसा देखें, अगर मैंने इसको bound above कर दिया, इसको मैंने bound above कर दिया, less than or equal. इसका मतलब I am in search of big O. Okay? And then I'm going to do the other way, which means I will want to find out the omega. Omega is the lower bound. Big O is the upper bound. Okay? All right. So पहले मैं क्या करता हूँ कि look at this. So the idea is very, very, very beautiful. And the idea is कि अगर मैं big O से denote करने के लिए जा रहा हूँ, यानी मैं कोई quantity है, इसके बारे में कह रहा हूँ कि भाई मैं ये quantity इससे तो कम है, क्या है? इससे तो कम है. जब आप देखें मेरी बात सुन, try to understand this. अगर मैं किसी quantity को measure कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये quantity इससे कम है, मैंने measure कर लिया, ठीक है? अच्छा, क्या चीज़ मुझे allow होनी चाहिए? अच्छा, मैं क्या करता हूँ? मैं ये काम करता हूँ कि अगर मैं एक quantity है, इस quantity को bound करना चाहता हूँ इससे कम, ठीक है? What should be allowed? कोई भी quantity, let's say कोई quantity है Q. मैं इस quantity को bound करना चाहता हूँ from above. Bound करना चाहता हूँ from above. That this quantity is less than or equal to T. ठीक है? अब एक मेरी बात सुनो. अच्छा, what can I do? अच्छा, अगर मैं ये कह दूँ कि अच्छा भाई, ठीक है इस Q को निकालना शायद मुश्किल हो, लेकिन मैं इस Q में कोई quantity एक है, for example, some quantity, add करते हैं. और मैं कहता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है इसमें मैं सम क्वांटिटी ऐड कर दूँ. हाँ, अब ये क्वांटिटी इससे लेस देन है. हाँ, ये निकालना बड़ा आसान है. ये निकालना बहुत आसान है. ये मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? और मैं कह दूँ ये क्वांटिटी लेस देन इसके है. Is it obvious thing to infer कि अगर ये चीज T से कम है तो obvious बात है Q T से कम है. Okay? What I have done is कि मैंने actually कोई एक इस Q के बारे में बाउंड निकाल दी. मैंने इसमें कोई और क्वांटिटी ऐड कर दी और मैंने कहा देखो जी ये इससे कम है तो ऑब्वियस सी बात है जो ये क्वांटिटी होगी वो ऑब्वियस सी बात है. ये बात सुना? When I will going to bound from above, I have a leverage and that leverage is you can add some quantity. ठीक है? And try to bound easily. ठीक है? What I will going to do is I will going to do a trick which will going to make this thing very trivial to solve. Okay? And how I will going to do that? Look at this. What I will do is ये मेरा quantity है, let me call this Sn. ये मेरी quantity है, let me call this Sn. जिसको मैं bound करना चाहता हूँ. सही है? Now look at this. So remember this rule. Whenever you are computing O, what you are allowed is Q plus some quantity is less than some T. ठीक है, ये बात याद रखें. Whenever you are computing some O, this is something which is given to you as a leverage. Okay? All right. Now look at this. What I will go into.
erase this part. मैं क्या करता हूँ, ये जो n क्वांटिटी है, इनमें से सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है? n, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, हर क्वांटिटी को n से रिप्लेस करता हूँ. अच्छा, so but can I say the following, that this sum n, whichever I want to compute, that will be smaller than or equal to n plus n plus n plus n plus n plus n. Can I say the following? By which rule? अभी जो हमने डिफाइन किया, कि अगर मैं किसी चीज की अपर बाउंड निकालना चाह रहा हूँ तो उसमें मुझे ऐड करने की इजाजत है. अब ऐड करने की इजाजत है तो मतलब मैं कह रहा हूँ इसमें मैं n-1 ऐड कर देता हूँ, इसमें मैं n-2 ऐड करता हूँ, whatever. मैंने सबसे बड़ी क्वांटिटी पकड़ी और मैंने सबसे रिप्लेस कर दिया और मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्वांटिटी है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बाउंडेड है, है ना? What is this quantity equal to? This quantity is there are n terms and every term is n. So obviously बात है कि this quantity is O of n square because this quantity is actually equal to n square. So this sum is less than n square, which is obvious thing to say that this sum is O of n square. इसे कुछ समझ में आएगा? Everybody understand the trick, okay? अच्छा, अगर हमने ये trick बिग O निकालने के लिए की है, यही ट्रिक हम ऐसा करते हैं बिग ओमेगा निकालने के लिए भी लगाते हैं, ठीक है? अच्छा, बिग ओमेगा निकालते हुए जो चीज आपको अलाउ होती है वो ये कि इफ यू वांट टू मेजर सम क्वांटिटी, ओके, व्हाट इज अलाउड टू यू? द थिंग व्हिच इज अलाउड इज कि इस क्वांटिटी में से मुझे इजाजत है कोई सम क्वांटिटी माइनस करने की, ठीक है? मैं उस क्वांटिटी का तो देखो यार, इस क्वांटिटी को मैं छोटा, कि मैंने प्रूव करता कि इससे बड़ी है, तो मैं करता हूँ इस क्वांटिटी को थोड़ा छोटा कर देता हूँ और मैं कहता हूँ अच्छा ये जो छोटी क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी जो होगी वो लेट्स से सम टी क्वांटिटी से, वो मैंने टी लिखा है, इसको मैं टी2 करता हूँ. इफ आई कैन प्रूव समहाउ कि इस क्वांटिटी में से कुछ निकाल दो तो वो इससे बड़ा होता है, तो एक्चुअल क्वांटिटी तो ये है जिसके बारे में मैंने बाउंडिंग करनी थी. तो अगर मैंने इसमें से कुछ निकाल के मैंने कहा कि ये इससे बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो ओरिजिनल क्वांटिटी होगी वो इससे बड़ी होगी. ये सब कुछ समझ में आई बात नहीं सर? नीचे वाला थोड़ा सा अभी कार है, कंफ्यूज कर रहा है. क्या कंफ्यूज कर रहा है? देखो मैंने इस क्वांटिटी की बाउंड निकाली, मैंने क्या किया, मैंने सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी से रिप्लेस कर दिया और मैंने क्या अबव बाउंड करना था, तो मैंने कहा यार देखो इसमें मैं कुछ ऐड भी करूंगा तो फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कहता हूँ मैं सब क्वांटिटी को बड़ी वाली से रिप्लेस करूँ और मैं कहता हूँ देखो ये सम जिसको मैंने बाउंड करना था वो मेरा इससे तो छोटा ही होगा, है ना? तो ये आएगा n स्क्वायर, क्योंकि देयर आर n क्वांटिटीज, एवरी क्वांटिटी इज नेक्स्ट n, राइट? अच्छा, मैंने बाउंडेड बिलो करने के लिए आपको क्या लीवरेज है पहले आप वो समझ. लीवरेज ये है कि आप चाहें तो कुछ क्वांटिटी निकाल सकते हैं क्योंकि आप बाउंड बिलो कर रहे हैं, और अगर आप उसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल कर उसको बड़ा जल्दी मेजर कर सकते हैं तो आपको आज़ादी है, ठीक है? आपको आज़ादी है. चलिए देखिए, अब मैं एक काम करता हूँ, यही काम जैसे मैंने पहले किया था और मैं इस पे अराइज हुआ था. अब मैं केस 2 शुरू करता हूँ और केस 2 शुरू करने के लिए क्या करता हूँ, अब मैं बाउंड बिलो निकालना चाहता हूँ. तो बाउंड बिलो करने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए, कैन आई से द सम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हाट? इसमें मैंने बड़ी क्वांटिटी से रिप्लेस किया था, अब मैं किससे रिप्लेस करती हूँ? सबसे छोटी क्वांटिटी से. दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 + 1 + 1 + 1 + 1 डाटा + 1. How many ones? n. I've added 1 n times. This quantity will be greater than n or equal to n, right? अच्छा, इसका मतलब मैंने क्या प्रूव किया? मैंने प्रूव ये किया that this quantity is greater than or equal to how much? n is omega of n. है ना? सर ये n कैसे? मैंने हर क्वांटिटी को उसी से छोटी वाली टर्म से रिप्लेस कर दिया और मैंने कहा कि इतनी टर्म में n टर्म है,
n टर्म्स की सीरीज है तो हर क्वांटिटी 1 1 है तो एट मैक्स कितना सम बनेगा n है बनेगा। इसका मतलब ये जो सम है ये n से तो बड़ा है। ओके n से तो बड़ा है। अच्छा तो ये बड़ा है ये बड़ा है। There is a huge gap between n square and n. There is a huge gap between n square and n. Okay? जब भी हम एक फंक्शन को क्लोज बाउंड निकाल रहे होते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये फंक्शन और ये फंक्शन ये दोनों फंक्शन सेम होते हैं। अब हमसे एक चबल बची है, या तो हमने ये गलत कंप्यूट किया या हमने ये गलत किया, हो सकता है दोनों गलत कंप्यूट किया क्योंकि दरमियान में बहुत बड़ा गैप है। n is like this, n square is like second आसमान, ठीक है? There is a huge gap between them, है ना? So either we have computed this wrong or we have computed this wrong, or it could be possible कि दोनों के दोनों बड़े हों, हमने कोई दरमियान की क्वांटिटी मुझे कर, है ना? जी सर दोनों को बराबर मतलब कह रहे हैं ऑफ n जो ये n स्क्वायर है और ये भी n स्क्वायर सम कांस्टेंट टाइम n स्क्वायर होता तो फिर ये बात की मतलब दोनों को एक ही होना चाहिए कि अगर करीब करीब हो तो तब भी चले करीब मतलब अगर जैसे वो है अगर ये लेट्स से 1 n स्क्वायर आया वो लेट्स से हाफ n स्क्वायर आ जाता तो हमारे लिए फाइन तब और एक्चुअली हम वही करें कुछ सम कांस्टेंट टाइम n स्क्वायर होता तो इट वुड हैव बीन फाइन, या ये कांस्टेंट टाइम n होता तो भी इट वुड हैव बीन फाइन। और अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो बेस्ट केस है। ओ बहुत अच्छा बेस्ट केस है, तो बहुत ही अच्छा केस है। सर इसमें हम लोग हाफ वाली सेंटर वाली वैल्यू रखते हैं मतलब एक ही हो चलो देखते हैं। Everybody understand this technique so far, okay? अच्छा आप देखिए मैं थोड़ा सा एक और ट्वीक करता हूँ। This is the most beautiful tweak. The tweak is the following. कि मैं करता हूँ ये जो मुझे लगता है मैं एक आपको एक ट्रिक बताता हूँ। The trick is the following. कि ये जो मैंने once इस हाथ में छोटे वाले में रिप्लेस किया ना, मैं एक काम वो ये look at this. मैंने इस Sn को क्या करना था बाउंड करना। मैं इसकी ना पहली हाफ वैल्यूज को देखता हूँ, हाफ से जस्ट पहले n by 2 से कम, ठीक है? अच्छा लोअर बाउंड निकाल दिया। लोअर बाउंड निकालने में आई हैव लीवरेज टू रिमूव सम ऑफ द क्वांटिटीज। सो व्हाट आई डू इज कि मैं इसमें से पहली हाफ क्वांटिटी निकाल के बाहर फेंकूंगा, ठीक है? हाफ क्वांटिटी निकाल के बाहर फेंकूंगा। तो कैन आई से द फॉलोइंग कि दिस Sn is still greater than or equal to this k n by 2 plus n by 2 plus 1 plus n by 2 plus 2 plus plus n by 2 plus n by 2. Can I say this? Can I say this? ठीक है? अच्छा इसे करने से क्या होगा? Do you agree with this statement or not? Yes sir. ये original sum है वो इससे तो बड़ा होगा। क्यों? Actually what I have done is कि मैंने कुछ quantity निकाल। अब निकालने की मुझे इजाजत है क्योंकि I am actually bounding this quantity from below. If I am doing the bound from below, it means I have the leverage to remove something. Okay? All right. And here is the solution. What I will do is now I will apply the same procedure जो हमने पहले लगाया। क्या मतलब? अब मैं सबसे छोटी क्वांटिटी से हर एक को रिप्लेस करूँगा। So can I say this that this Sn will still be greater than or equal to किसके? अब मैं हर क्वांटिटी को n by 2 से रिप्लेस करूँगा। Can I say this or no? Yes sir. Why? क्योंकि मैंने एक्चुअली ये 1 2 3 जो भी थे वो निकाल दिए और निकालने की इजाजत मुझे है, ठीक है? आप ये देखिए। What is this summation equal to? This is very easy to complete. Why? Because every quantity is n by 2 and it is repeated n by 2 times it is equal to n square by 4. Which means this summation is omega of n square with a coefficient of 1 by 4. My question. Does it make sense? जी बताता है। सर ये n by 2 टाइम्स रिपीट तो नहीं हुआ, n टाइम्स नहीं रिपीट हुआ। कैसे रिपीट हुआ?
पहली हाफ टर्म में हमने रिमूव कर दी तो कितनी बच गई, हाफ बचे। तो ये हाफ टर्म है जिनको मैंने सम कर दिया और हर क्वांटिटी n/2 से, सो n/2 टर्म्स। और ठीक है, अब आपको सवाल करना चाहिए, ठीक है, कि भाई n/2 ही क्यों रिमूव किया, ठीक है, n/2 ही क्यों। एक्चुअली दिस ट्रिक विल स्टिल बी वैलिड अगर मैं कोई बस n का प्रोपोर्शन निकालूं। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने n/2 निकाली, मैं n/2 नहीं निकालता बल्कि मैं लेट्स से n/10 निकालता। पहली n/10 टर्म्स को मैं उसमें से इरेज करता, क्या होगा? My first term will be not n/2 but the first term will be n/9, right? And then it will be n/9 plus 1 and then it will be plus n/9 plus 2 and then ये सारे के सारे जो है वो लास्ट टर्म क्या होगी? The last term will be n/9 plus 8n/9. अब मेरा सवाल ये है कि ये 9n/9 से जब शुरू हुआ था तो ये था n/9 plus 0, ठीक है ना? n/9 plus 0, n/9 plus 1, n/9 plus 2 से लेकर n/9 plus 8 n/9 तक किया। अलिशबा तो भाई ये कितने टर्म है? 9। पहली n/9 तो मैंने रिमूव कर दी, तो भाई कितनी लगी? n/9 minus 1 which is 8n/9 into n/9 minus 1. ये तो कहाँ से गया? तो आपने रिमूव कितनी की? मैंने रिमूव पहली मैं कह रहा हूँ ये टर्म है कितनी, मैं मुझे बताओ। ये डॉट 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 लगा हुआ है, मैं सवाल ही कर रहा हूँ ये टर्म है कितनी। देख लो ये तो आ रहा है, ये n/9 plus 0 से शुरू है, n/9 plus 1 फिर n/9 plus 2 और करते करते आखिरी टर्म n है, तो n/9 में क्या ऐड करो तो ये n बन जाता है 8n/9, ठीक है? ऐसे लो ना तो बन जाता है 9 और 9। तो ये 0 से शुरू हुआ था 8n/9 तक गया, तो कितनी टर्म होगी? 8n/9 plus 1। 0 से इंडेक्सिंग करें और आप 10 तक जाएं तो उसके बाद 11 के है ना? ये बिल्कुल वही काम है, तो बेस एड्रेस और उससे आपने काम है। अच्छा नहीं मिली था और यहाँ पर मैं सेम ट्रिक कर सकता हूँ कि every quantity is n/9 and there are how many terms? 8n/9 terms and that accumulates to 8n square by 81. This is just a constant. This is just a constant, which means it will still be omega of n square. कांस्टेंट मैटर कर रहा है क्या मैटर नहीं करता? हमने कहा था ओमेगा नोटेशन में, ओ नोटेशन में कांस्टेंट मैटर नहीं करता। The only thing matters is that this will be n square, so this is n square. Does it make sense? We will say it must be bounded below and bounded above by the same function. So, and we have accomplished that, which means that this quantity is how much? Theta of n square. जी तुम्हारा सम तो क्या? विथ हम कांस्टेंट यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट है और इसके लिए कांस्टेंट 1 है और इसके लिए कांस्टेंट जो है वो 8/81 कर लो या 1/4 कर लो, ठीक है? जी ये जो हमारी टेक्निक हमने यूज किया कि ये हर केस में चल जाएगी? नहीं, अगर मेरे पास अभी चुप रहो ब्रदर। Everybody understand this. Let's practice it. Everybody understand this. कोई इशू तो बताओ दानिया, ठीक है? अच्छा look at this. Let me do some tweaking and ask you कि ये चीज क्या बनती है, ठीक है? What if कि इसकी जगह मैं कर देता प्लस d. What will this quantity be? O of what? O of t square, ठीक है? O of t square, है ना? What about t की जगह मैं यहाँ p कर, तो ये क्या हो जाएगा? t square, है ना? खामोश प्लीज। राबिया
If it was n, then it was n squared. If it is p, then it is p squared. Parabola. What will be this summation? N. This will be n. Because instead of t now it is square root of n, it will be just square root of n whole square. That means it will be square root of n whole square, that is actually n. What about if I write here log n? 2n अब 2n कैसे आ गया? n हो जाएगा। सर 2 log 2 कहाँ से क्या मतलब? क्या? log n square है ना 2 बार आ जाएगा। भाई ग्राफ ऑफ करो 1 मिनट। log n whole square। और एक बात सुनिए वहाँ से। log n whole square is not log n square. This essentially is log square n. log square n का मतलब होता है, ये देखिए बात और सुन लें, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। log square n का मतलब होता है log n times log n, और log n square का मतलब होता है, log की प्रॉपर्टी भी 2 नीचे आ जाता है, that is actually 2 times log n, which essentially is log n plus log। बराबर? इधर देख लो, log square n is log n times log n, and log n square is 2 times log n, okay? Which essentially is log n plus log। So never ever say that log square n is pronounce it as log n square, where log n square is actually this quantity, okay? So be careful, okay? Where is it? Shahid, what will be this one? Khamosh. N power 4. Okay? What is this quantity equal to? This quantity is equal to actually n power 4. अच्छा, how do you compute that? अगर मैं इसकी भी same bound निकालूं, प्लीज मेरी बात सुनो। अच्छा चलो पहले मुझे ये बताओ, इस टर्म में कितनी? इसमें शाबाश, इसमें n स्क्वायर टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? सो अगर मैं above bound करता हूँ, तो मैं Sn में हर क्वांटिटी को कहूँगा this quantity is less than or equal to n square plus n square plus n square. There are how many n square added? N square added n square times, which is actually equal to O of n to the power 4. Okay? अगर मैंने इसकी अब lower bound निकाला, अब मैं lower bound कैसे निकालूँगा? बिल्कुल वैसे। I will remove some fraction. Let me erase half of the fraction. If I remove half of the fraction, that will be equal to Sn is greater than or equal to, जी बताएं बेटा, n square by 2 से मैं शुरू करता हूँ, पहली हाफ टर्म मैंने वो रिमूव कर, so n square plus n square divided 2 plus 1 plus n square divided by 2 plus 2 plus आगे आ जाएगा n square by 2 plus n square by 2, that is equal to n square, right? There are how many terms? There are n square by 2 terms, and every term is at least n square by 2, that is equal to n square by 4. So this quantity is obviously 4. So this summation is sorry, ये less than था और greater than or equal to कितना हो गया? 1 by 4 times n to the power. Okay? So bounded above by n to the power 4 and bounded below by also n to the power 4. Does that make sense? Yes, yes. ठीक है? Okay. Let's test. हाँ. Be careful, because this is a real test.
How much there please? Plus 5 या 5 square? Yeah, 5 square. What is big O of this? फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें n 4 हो जाएगा n square into n square plus 1 divided by 2 करेंगे. How much do you? The time is gone. So, there are how many terms in this? How much? अभी भी n square ही है. 3n square. नहीं n cube. There are how many terms in this? First tell me this. Papa, there are n terms. There are how many terms in this? There are only n terms. Okay? There are only n terms. Okay? There are only n terms. And if you replace it by the largest quantity, which is n square, this quantity Sn will be smaller than or equal to n square plus n square plus n square plus n square. There are n number of n squares. So this quantity is equal to n times n square, that is equal to n cube. So this quantity is smaller than or equal to n cube, which means O of n cube. Okay? Which is different. It's not n to the power. Okay? Let's try to do the same for the lower bound. Okay? Sorry? N cube लिखा है. N cube less than or equal to n cube. Okay? Look now. Now let's do the same halving technique, lower bound. Okay? So now let's do for lower bound. अब मैं ऐसा यहाँ लिखता हूँ that has to be greater than or equal to. Let me remove the half of the term. So the middle term is g n by 2 whole square. The next term is n by 2 plus 1 whole square plus plus n by 2 plus n by 2 whole square. Okay? There are how many terms? There are n by 2 terms. And every single one of them is obviously greater than this quantity. Okay? Greater than क्यों कह रहा हूँ मैं? Because I am bounding below. So I can remove some of the one. और remove मतलब मैंने कौन सी की है? मैंने यहाँ से मजीद remove कर दी, ये भी remove कर दी, ये भी remove कर दी. ये वाला पार्ट इतना भी था, वो second part में remove कर दिया. Okay? Which means this becomes n by 2 times n by 2 whole square. That comes out to be n square n cube over 8. That comes out to be 1 by 8 times n to the power cube, which essentially means omega of n cube. We have found its tight upper and lower bound. Okay? जी सर. सर वो जैसा आपने पहले किया था कि सबसे छोटी टर्म ली थी उसको हाँ. तो आप अभी वो नहीं कर रहे तो हमें ये कौन नहीं अगर मैं सबसे छोटी वाली से रिप्लेस कर दूं तो प्रॉब्लम हो जाता है. वो क्योंकि सबसे कम हो क्योंकि जाए वो सारे 1 से रिप्लेस हो जाएंगे तो वो गैप बहुत बड़ा आ जाता है. तो मैं कहता हूँ मैं पहले हाफ इग्नोर मारता हूँ. हाफ इग्नोर करने से फायदा क्या होता है कि वो जो चीज है वो फ्रैक्शन वो ओरिजिनल साइज की फॉर्म में आ जाती है. जब ओरिजिनल साइज की फॉर्म में आ जाती है तो फिर अब चीजें काफी अब रिप्लेस करना आसान था. तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि सबसे छोटी टर्म हम लें. डायरेक्टली पहला स्टेप नहीं करना चाहिए. सबसे पहली छोटी टर्म से नहीं करनी चाहिए, वो बहुत छोटी टर्म है. ओके सर अगर हमारे पास जो एसएन है उसमें है सारा n plus n plus n plus n plus n plus so on n तो फिर तो वो वैसे ही n square फिर तो है. और विदिन दफा आ रहा उससे बेटर. अगर वो n टाइम आ रहा तो n स्क्वायर होगा, अगर वो n क्यूब टाइम आ रहा तो n टू द 4 होगा. एक अगर हम इनके मैन का फिल्टर चेंज कर दें बेटर होगा. अभी सर हाँ जी सर बाउंड करने में फ्रैक्शन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं प्लस बाउंडिंग को करते हैं. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट. कि ठीक है हम बहुत बड़ा पार्ट छोड़ रहे हैं लेकिन द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज स्टिल आई एम एबल टू बाउंड विद अ फंक्शन with which I have bounded above also. फंक्शन सेम है. That's all I need. जी, that's all I need. Because constant doesn't matter. मैंने आपको कहा था अगर if constants are bothering you, you should go watch the lecture by Kashin. That is अच्छा कि हमारे lecture पर पढ़ा है. ठीक है? If you are worried about कि भाई एक constant और constant बड़ा फर्क है,
go watch the lecture by Kashif, एक बार तमाम ठीक है कि why constants are unimportant, they are useless. Okay, why in algorithmic term constants mean nothing, seriously nothing. जी सर अभी टर्म छोड़े हैं जैसे up to n/2 तक हमने छोड़ा है तब आपने n/2 रिटर्न दी actually n/2 लाजमी नहीं है, it could be some fraction. n/n छोड़ी है n/1 यूज Sorry? n/n -1 यूज कर n/n -1 आपने n/2 है तो अगर हम दूसरी जगह n -1 करते हैं वहां या n-5 या समथिंग वो बहुत छोटी टर्म तो फिर बहुत थोड़ा सा है. Actually the thing is what I have to be careful about is कि lower bound और upper bound वो सेम होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि मैं इतना मतलब माइनस कर दूं कि वो अब उस तरह में गैप आ जाए. अगर गैप आएगा इसका मतलब है कि आपने क्लोज बाउंड नहीं निकाला. अगर गैप ना हो तो इसका मतलब है कि आपने एक्चुअली क्लोज बाउंड निकाला. ठीक है सर तुम्हारा सवाल जो है वो हम ऑफ करते हैं. So let me सुरेश ने भी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा जबरदस्त सवाल किया. सुरेश ने नहीं हमने नहीं. Is there a case where this halving technique fails? Let me show you that case. Really? Yes. Sorry. Suresh. All right. Look at this. All right. यार तुझे जो भी आवाज कर रहा था, जो भी आवाज आता कर रहा था, ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? सरकार की मैं सही कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा उसको ऑफ करते जाएंगे आप उतना ज़्यादा उसकी बोर्ड बाउंड्स के करीब लेते जाएंगे. चार क्या पता नहीं मुझे नहीं पता. Try to work it out. All right. Now look at this. All right. Let me write another series, and you will see कि ये halving technique हमारी fail है. Let me write it down. Halving technique. Halving या आप समझ लें कि halving तो लाज़मी नहीं. Fractional removal. हमें क्या? जब एक fraction को निकालने बात करो. Actually ये ऊपर तो लिखा हुआ नहीं. Fraction removal या fraction addition. ठीक है? All right. All right. So look at this. So let me write down another series. This is a series. अच्छा, अब हम वही काम करते हैं पहले सबसे लार्जेस्ट टर्म पकड़ते हैं, सबको रिप्लेस करते हैं. ठीक है? By the way, there are how many terms in this? Log n terms. There are how many terms in this? Log this 2. Okay? If I do the following, in my hard quantity को ऐसे replace करो. This quantity is Sn. So Sn is smaller than or equal to n plus n plus n plus n. करते करते plus n plus n. Okay? So this quantity is n log n. This quantity is n log n. ठीक है? So लगता है ऐसे है कि हमारी अपर बाउंड जो है वो माने कैलकुलेट करती है n log n. अब सवाल ये है कि हम लोअर बाउंड निकालें. ठीक है? तो लोअर बाउंड कैसे? जी लोअर बाउंड कैसे? जी हाफ छोड़े. हाफ छोड़े. n/2 छोड़े. वो n/2 ये टर्म बनती है. n/2 ये टर्म बनती है जो कि सिर्फ एक टर्म पीछे है. और अगर आप गलती से n/2 तक छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये टर्म छोड़ेंगे तो बाकी सिर्फ n बचेगा. So and there will be a gap. So अगर तुम ये n/2 तक छोड़ दो so Sn will become greater than or equal to n. N is a gap. So n, this is n log n. Okay.
जब पहले हमें ये लगा था कि हमारी लोअर बाउंड गलत आती है ना, यानी लोअर बाउंड गलत आती है, अपर बाउंड जो है वो सही आती है, और फिर हमें लगता है कि हमें लोअर बाउंड को ऊपर नहीं जाना है ना. You will see a surprisingly different thing here. Okay? Great. Either this is wrong or this is wrong. Okay? If you remember your homework 1, I showed you a beautiful example. एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी ट्रिक करते हैं. इसमें ना n कॉमन निकाल, इस क्वांटिटी में से n कॉमन निकाल. अच्छा बेटा यहाँ पे क्या करते हैं? एक मिनट मैं से n कॉमन निकालता हूँ. मैं इसमें से n कॉमन निकालता हूँ. This become n, so n बाहर निकल गया. यहाँ पे 1 बच गया. तो वाह, ये क्या बच जाएगा? यहाँ पे 1/2. अगली पे क्या बच जाएगा? अगली क्या बचेगा? 1/n. तो log n. अगर 1 तक जाना है तो this become 1/2 to the power log base 2n. क्योंकि log base 2n टर्म्स है, log base 2n टर्म्स है ना, और ये 1/2 to the power 0 से शुरू हुआ था, to the power 0, to the power 1, to the power 2, to the power 3. तो ये कितनी टर्म में log base 2n टर्म to the power log base 2n, और log base 2n is actually 2 to the power log base 2n is n और 2 को साफ करो, ये मिलता है n की पावर log base 2, that is 1, that is n divided by n is 1. That makes sense? हाँ? क्यों बोल दिया? अगर तुमने 1/n बोला तो फिर ठीक बात. 1/2 to the power n बोला. अगर n बोला फिर ठीक है. But actually yes sir. ठीक है? एक मिनट. I'm after summing this up. Okay? I'm after summing this up. Okay? If you remember homework 1, this is, let me make 2 blocks. Okay? It's a block of 1 cross 1 unit. 1 cross 1 unit कितना होता है? 1 unit area, 1 unit square area. ठीक है? What I will do is, I will going to fill up this quantity. और जिस तरह मैं fill करता जाऊँगा उसी तरह मैं shade करता जाऊँगा. ठीक है? So this quantity is 1. Let me shade this up. ये quantity कितनी है? 1 square unit, 1 square unit, 2. 2 square unit बराबर. ठीक है? So 1 हमने shade कर दिया. 1 का half. कितना बाकी बच गया? 1 बाकी बच गया. तो ये मैंने remove किया. Half. Okay? ये भी हो गया. कितना बाकी बच गया? लिशवा. कितना बाकी बच गया? हाँ? ये पूरा जो था वो 1 था. ये कितना बाकी बच गया? 1/2. मतलब हो गया? So 1/2 is remaining, और 1/4 is इसका half. So you shade this quantity, और ये भी होगा. Right? Whatever is this remaining, this is 1/2 times 1/2, which is 1/4, right? And the next quantity is 1/8, which is the half of this one. You remove this, this remains 1/2, this becomes 1/8. Okay? So the remaining quantity is 1/2 times 1/8, which is 1/16. Okay? And we have already added this, and we have all. चलो 1/4 बताओ. 1/4 ये बताओ. ठीक है? तो 1/2 का जो half होता है 1/4. ठीक है? So the next quantity is 1/16, and we have 1/8 left, which means क्या होगा? ये इसका half है. ये कभी भी fill नहीं होगा. ये कभी भी fill नहीं होगा. एंड तक जाते जहाँ मकसद चले जाएं, आखिर में एक छोटा सा ब्लॉक बच जाएगा. एक्चुअली मैं एक बात को बात, अगर आप इसको 1 पे रोकेंगे ना, अगर इससे आप 1 पे रोकेंगे तो एक ब्लॉक बच जाएगा. ठीक है? मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए आप 256 से शुरू करें. 256 प्लस 128 प्लस 64
plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 is actually equal to 255, not 256. एक ब्लॉक बच जाता है। हाँ, अगर आप 256 पे ले जाना चाहते हैं, you do another half. तो 1 को दोबारा हाफ करो, फिर उसका हाफ करो, फिर उसका हाफ करो, उसको infinitesimally small ले जाओ और लिमिट अप्रोच टू इंफिनिटी करो, तो ये 1 के बाद मजीद छोटा होगा और छोटा होता होता ऑलमोस्ट जाके 0 को पहुंचेगा। एट दैट मोमेंट दिस ब्लॉक विल बी फिल्ड. When n approaches to infinity, this block will be filled. Okay? Otherwise, this block will still remain the same. I mean, it will be left over. ठीक है? सर ये वो है जैसे एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता। जी ये वो है। जी वहाँ पे लिमिट हमारी हेल्प करेगी. ठीक है? Everybody understand? What we have just proved is कि ये summation 2n से कम है. What we have done is हमने इस summation को 2n से कम प्रूव किया. अपर बाउंड लोअर बाउंड. अपर बाउंड. So this quantity is, ये जो हमने कैलकुलेट किया था ये गलत था. So this quantity is less than 2 times n. Okay? और जो हमने नीचे बाउंड निकाली थी वो हमने ठीक निकाली. It's very obvious thing to prove कि इसकी लोअर बाउंड n है. क्यों? इसकी लोअर बाउंड, इस समेशन की लोअर बाउंड n है. ये बड़ा इजी टू प्रूव है. कैसे? मैंने शुरू की ये सारी टर्म निकाल के बाहर फेंक